Hi, Nupur here. And today I just want to share a story from my life. तो ये कहानी है 2013 की, 7 years back. I just graduated out from my Pune University Engineering College. And everybody around me seemed to have a plan, कोई मास्टर्स के लिए जा रहा है, कोई MBA के लिए जा रहा है, कोई MS करने के लिए जा रहे हैं. मतलब ये 4 साल इतनी मुश्किल से मैंने निकाले थे, लोग आगे पढ़ने का कैसे सोच लेते. So I was just wondering कि मैं क्या करूं. तो देखा बाकी सब जॉब ढूंढ रहे हैं and I also started looking for a job. And I so remember that I used to keep pestering my TPO, my training and placement officer of my college, all the time. So, इतनी मेहनत से मर के पढ़ा था वो मार्क्स लाने के लिए. And now I had first class distinction in my hands. And I was struggling for a job. So I went up to my TPO. Maybe this was for the 8th time. And I was like, sir, आपने कहा था. My TPO was like a very, fair and curly hair man with like huge spectacles. And he was just sitting there. He was like, देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है. एक्चुअली बात ये है कि छोटी कंपनीज टॉपर्स को नहीं लेना चाहती. उनको पता है कि आप लोग टिकने तो वाले हो नहीं, आप स्विच मार लोगे. कम से कम जो बैक बेंचर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे ज़्यादा, तो वो टिक के रहेंगे. आई एम लाइक ठटा 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 व्हाट. सडनली यू फील मेरी जिंदगी ही झूठ है, लाइफ इज अ लाई. मर के मैंने 8 semesters पढ़ाई करी and now this person is saying that's the very reason that I'm not getting a job. I was like, what's going on? What's wrong with this world? What's wrong with this college? What is wrong with this system? I continued my search and I was paying these consultancies all the money and all. एक ने मतलब पैसे लेके वो कभी कॉल बैक ही नहीं करते थे कोई जॉब इंटरव्यू कॉल को लेके. आई वाज फीलिंग इट वाज लाइक 1 week, 2 week, 3 week, no replies to emails, don't even get an interview call. It's so disheartening. 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, and then finally 3 महीने बाद 3 महीने बाद जाके मेरे को एक placement consultancy से call आया. And they told me that you have this interview, this is the name of the company, please go on this date and this time. I was like all finally Asha ki Kiran sort of mode, and I prepared so well for the company and the job profile, everything. And it was raining very heavily that day. उसमें भी फिर I had my own Activa, my college's Activa, and I wore a raincoat and my mom was like, जाओ बेटा जाओ. तू सफल हो गया. Google Maps लगाया मैंने and it showed that this particular company is like a little far away, 1 hour distance दिखा रहा था ride. I was like, okay, मैं Google Maps पे चली जाऊंगी अकेले. मैं चलाते जा रही हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है. उसमें भी मैं चलाते जा रही हूँ. मतलब धीरे धीरे करके सिटी लिमिट्स ख़त्म होने लग गए और फिर वो रास्ता थोड़ा और कच्चा होने लग गया और फिर धीरे धीरे और सुनसान. मतलब एक पॉइंट के बाद तो भाई पहाड़ी आ गए. आई एम लाइक, भाई ये है कहाँ कंपनी. आई वाज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन. फिर इक्का दुक्का कहीं कोई दिखेगा, इंसान दिखेगा. एंड दे आर ऑल्सो वंडरिंग ये बंदी ट्राउजर शर्ट पहन के स्कूटी पे कहाँ जा रही है. So I was feeling very awkward and little scared, but still I had to go for the interview. Also wondering कि भाई आज इतना टाइम लग रहा है, हर रोज अप डाउन कैसे करूँगी, इतना दूर है ये. अगर ऐसे finally after
2 hours, almost 2 hours, I reached that place. I found it. Watchman को बोला कि I have this interview at 11 a.m. today. Let me in. तो he was like, wait, let me check. तो वो गए अंदर और बाहर आए जब तक I was waiting कि भाई जल्दी ले लो अंदर. And he was like, मैडम, हाँ ऐसी तो कोई वैकेंसी नहीं है. I'm like, what? नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, मेरे कंसल्टेंट ने मुझे भेजा है यहाँ पे. He was like, मैडम वो वैकेंसी तो फुल हो गया कब का, आप लेट आए हो. ठडा ठडा ठडा. 2 hours I've been riding my ass off on this Activa to reach this place, and now this guy is saying कि वो vacancy है ही नहीं. I was so heartbroken. I went back and I was on my way back. I was wearing a scarf on my face like a typical Puneri girl, and I was crying. I was crying like anything behind the scarf. ये जिंदगी खराब है, किस्मत ही खराब है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है. करते करते मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक शिवा टेम्पल दिखा. So I was like, let's take a break. I was so emotionally drained. I was so frustrated. You know, I was feeling like सारे दरवाजे जब बंद हो जाते ना, you just so cornered. तो मैं वहाँ जाके बैठ गई थक हार के एकदम. और जिस शिवलिंग के थोड़ा पास में मैं बैठी एंड मुझे ध्यान लग गया. I have been meditating for quite a few years. So after meditating for some time, जब मेरी आंखें खुली, so I was feeling very, very, different than what I was feeling before. So before I was feeling very victimized, I was feeling like complaining and blaming the whole world, the world recession, my father for getting me into engineering, wasting the 4 years of my life, this bloody education system जो आपको डिग्री के अलावा और कुछ नहीं देता है. No skills, no contemporary knowledge, nothing. My college, everything. I was in that state कि everything is just against me, all the situations, and I have no control over anything. And after, जब मुझे ध्यान लग गया और जब मैं आंखें खोली, I was feeling very calm and collected and settled. And suddenly, a clarity dawned in me. I told to myself, नुपुर मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है. And I was introspecting कि मैं क्या गलत कर रही हूँ. And it was then when I realized कि it's high time that I start figuring out what I really want to do. Instead of just doing what everybody else is doing, because everybody is looking for a job, I'm also looking for a job. मुझे तो पता नहीं है मुझे क्या करना है, और उसके लिए मैं blame, complain यही सब करे जा रही हूँ. And I'm feeling overpowered by the situations. I was like, no, I'm doing something wrong here. I need to take responsibility for my own self. I need to take charge of my life. I need to take ownership of my life. ये जो एनर्जी मैं सबको ब्लेम करने में लगा रही हूँ, instead of that, why not focus that energy towards my own self? Understanding my own self, working on my own self, becoming a better version of my own self.